So bachon, let's read the given question, and the question states that so that fx equal to greatest integer function of x is neither continuous nor derivable at x equal to 2. So the key concept to solve this question is, suppose we have y is equal to greatest integer function of x. Here this x जो है this belongs to real number, तो जिसकी output होगी that is it rounds off the real number down to integer, also nearest. So nearest integer less than the given number. We see example. Suppose we have been given greatest integer function of 2.8. So इसकी nearest integer और less than number ये क्या हो जाएगी 2. Similarly we have been given 2.1. So इसकी greatest integer function of find करें, then again this will be 2. और अगर suppose we have minus 2.8, तो इसकी जो nearest integer है that is less than 2.8, minus 2.8, this is 3, minus 3. Similarly, if we have been given minus 2.1, then again this will be minus. So the next concept is f of x is continuous at x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए that should be finite. So अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है then we can say the given function is continuous at x equal to a. Here this left hand limit is given by limit x tends to a minus of fx. So this can be also written as limit h tends to 0 f of a minus h. Similarly, a right hand limit is given by limit x tends to a plus f of x equal to limit h tends to 0 f of a plus h. So again अगर हमें किसी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो then we can say f of x is derivable at x equal to a if left hand derivative, that is L of f prime a, should be equal to right hand derivative. Here this is left hand derivative and this is right hand derivative. Okay, so यहाँ पे अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होती है दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h minus f of a divided by minus h. Similarly, right hand derivative जो होती है that is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. So अगर दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to a दोनों इक्वल हो, then in that case we can say the given function is differentiable at that particular point. So we will use all this concept here to solve this. The given function f of x is greatest integer function of x. So पहले हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, so उसके लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी होगी and this is equal to limit x tends to a minus of fx. Also this is equal to limit h tends to 0 f of a minus h. So यहाँ पे अगर हम लोग a minus h को fx की फंक्शन में पुट करें then we will get limit h tends to 0 greatest integer function of a minus h, and जो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है that is at
a equal to 2. So again we can write here limit h tends to 0 और यहाँ पे a की वैल्यू को हम लोग 2 रख सकते हैं. दिस विल बी 2 माइनस h. अब सिंस h जो है एक स्मॉलर वैल्यू है एंड 2 में से हम कोई एक स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो इसकी नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगी, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगी 1. सो दिस विल बी वैल्यू 1. Similarly, if we have to find right hand limit, so this is limit x tends to, so a की वैल्यू 2 है and directly we can write 2 plus of f of x. So this is also equal to limit h tends to 0 f of 2 plus h. So this will be again directly limit h tends to 0 greatest integer function of 2 plus h. So here again h की वैल्यू स्मॉलर है और 2 में अगर हम कोई वैल्यू को ऐड कर रहे हैं कोई स्मॉलर वैल्यू को तो उसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगी दैट इज 2. So from here we can say that left hand limit not equal to right hand limit. That means the given function is not continuous at x equal to 2. So now we will check for the differentiability. Again, given function is f of x equal to greatest integer function of x at a equal to 2. So again सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालनी होगी. So this is equal to limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a divided by minus h. So this will be equal to limit h tends to 0 f of 2 minus h minus f of 2 divided by minus h. So this is limit h tends to 0 और यहाँ क्या आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई माइनस एच. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. सो 2 माइनस एच की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगी इसकी वैल्यू दैट इज 1 माइनस और 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगी माइनस डिवाइडेड बाई एच. सो यहाँ से हम लोग देख सकते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई h और h टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इन्फिनिटी और वी कैन से अनडिफाइंड वैल्यू. So again, we will have to find the right hand derivative. So right hand derivative of the given function is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h. So limit h tends to 0 और यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 है. So directly we can write 2 greatest integer function of 2 plus h minus greatest integer function of 2 divided by h. So this limit h tends to 0 और 2 प्लस h है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आउटपुट होगी दैट इज 2 ओनली क्योंकि 2 में हम लोग कोई एक स्मॉलर नंबर ऐड कर रहे हैं एंड देन उसकी नियरेस्ट इंटीजर जो हो जाएगी दैट इज 2 एंड अगेन 2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज आल्सो 2 डिवाइडेड बाय h. So 2 minus 2 is 0 so whole term will become 0. So from here we can say that left hand derivative not equal to a right hand derivative at x equal to 2. Therefore we can say that f of x is not derivable at. This is our final answer. We have proved that the given function f of x equal to greatest integer function of x is neither continuous nor derivable at x equal to 2. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.